Okay. So now today we're going to do our third group. First group क्या था हमारा? प्रिलिमिनरी था, देन मैम एलिमेंट्री किया, फिर उसके बाद हमने केयर ऑफ सेल्फ किया. अच्छा, केयर ऑफ सेल्फ किया. अब हम करेंगे ग्रेस एंड कर्टेसी एक्सरसाइजेस. ठीक है. अच्छा, ग्रेस एंड कर्टेसी एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया था कि इसमें जो है वो कोई यानी कि इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं होती है, ये इट्स अ ग्रुप प्रेजेंटेशन. ठीक है. अच्छा, ये पॉइंट्स मेंशन नोट डाउन करें. इट्स अ ग्रुप प्रेजेंटेशन. It is unintentional exercise. It has unintentional exercises. और इसमें there are certain exercises in which one-to-one correspondence, one-to-one individual attention is required. ठीक है. Otherwise, many of the exercises that we do in this is they are group exercises. Okay, so now today we are going to do write a note on introduction to grace and courtesy exercise. ठीक है. इस पे एक छोटा short lecture है, and then today we are going to do the lecture only. उसके बाद इसमें से वो exercises जो कि हमें required है for our file, we are going to do those exercises. Otherwise, there's a list given to you, and you can refer to the list whenever you want to like for your remembrance. ठीक है. Okay, now there's no set except for a few exercises. There are no set rules. There are no set patterns to follow grace and courtesy. ठीक है. अच्छा, grace and courtesy is also, अब जैसे मैंने शुरू में बताया था एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें they don't have a specific set of material across the globe. Every exercise has a different set of tools, utensils, that is according to the culture of that country. Okay? Some countries might be using only steel utensils. Some might only be using glass utensils. Some might be using plastic utensils. Some might be having big ones. Some might be having small ones. Some might be having colorful ones. It is according to the availability of the resources in a country and according to the traditions. Okay. So practical life exercise में there is no the sky is the limit. ठीक है. Sky is the limit. So हमने जो exercise किए हैं, we have done those exercise जो कि बिल्कुल basic exercise है, जिसकी basis पे you can invent your own exercises according to the culture, according to the time you are teaching a child, raising a child. ठीक है. बाकी जैसे सेंसोरियल है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी देयर आर सम लाइक कुछ एक्सरसाइज ऐसी मत लाइक इट्स लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी डू द सेम थिंग, हमारे इंग्लिश में हम बुकलेट्स बनाते हैं, तो सेम सिमिलरली यू कैन डू दैट इन चाइनीज एज वेल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. सो उसमें लैंग्वेज चेंज होगा. उर्दू में भी वैसे कर सकते हैं. वी कैन डू दैट सेम थिंग इन उर्दू. वी कैन डू द सेम थिंग इन फ्रेंच. Everything is same except for exercise of practical life, जिसमें name of few exercises are same but the material used are not same. ठीक है. Similarly, when we are going to do exercise introduction to grace and courtesy, जो आपको lecture होगा, you are going to understand कि किस तरह different cultures, मुख्तलिफ culture में जो रहते हैं हम, we can invent our own exercise. मतलब for example देखो, जैसे in India they join hands together. This is not our culture, so they might have it in their list of grace and courtesy to teach the child to bow down, touch the legs, touch the feet, touch or like bow in front of the people. अब हमारा इस्लामिक कल्चर क्या कहता है कि that is not right. ठीक है. That is like हराम कि आप किसी के सामने अल्लाह के अलावा वो कर रहे हैं. ठीक है. So okay. Okay, so now let's start. अच्छा, अब it is recommended कि आप लोग मेरा lecture note down भी करते हैं, because there are some points जो कि that are not present in the notes, जो कि मैं it's like according to my experience I am going to share with you.
ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी के यू जस्ट रिलाई ऑन द लेक्चर दैट आई सेंट, आपने ना नोट डाउन भी करते जाना है बहुत सारे पॉइंट्स। अंडरस्टैंड, बहुत चीजें होती है कि हम प्रिपेयर तो मैं कर लेती हूँ पहले से लेक्चर्स, लेकिन फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू बात करते हुए मुझे एकदम याद आते हैं कि हाँ हाँ वी कैन रिलेट दिस एज वेल। ठीक है, अच्छा नाउ हमने किया था टेंडेंसीज, इफ यू रिमेम्बर टेंडेंसीज एंड सेंसिटिव पीरियड। यस मैम। तो सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर क्या था? सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर क्या था? मैम जिस वक्त बच्चे के अंदर ये सेंस आ रही होती है, ऑर्डरिंग चल रही होती है, जिसमें आपने एग्जांपल्स दिया था कि बहुत टाइम बच्चे मैनेज इसमें चल रहे होते हैं। ऑर्डर क्या होता है? बच्चा सुबह उठता है, डू यू घूम गिव हिम देना। डिनर, डू यू गिव हिम डिनर, लंच देते हो, व्हाट डू यू गिव? देखो आप रूटीन से, ऑर्डर इज ब्रेकफास्ट। लाइक अ रूटीन, ठीक है, ऑर्डर इज लाइक अ रूटीन। सो जो बच्चे होते हैं ना, द बेबीज, दे आर बोर्न विद दीज टेंडेंसीज, ठीक है, टेंडेंसीज, एंड दे आर बोर्न, these tendencies work in a certain period in their lifetime that is called a sensitive period, ठीक है। अच्छा देखो, when I was studying this course मैं भी कंफ्यूज होती थी between sensitive periods and tendencies, ठीक है, लेकिन इफ यू अब मैं आपको बताऊं, बहुत इजी है। सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है? टाइम, इफ वी कैन आल्सो से सेंसिटिव टाइम, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट आर टेंडेंसीज? दैट इज समथिंग फ्रॉम विद इन, जैसे कि बच्चे को बोलता है, सो 1 years of age, 1 year का जो बच्चा होता है तो वो काफी कुछ वर्ड्स बोलना शुरू हो चुका होता है, तो who teaches the child? Nobody teaches it. It's from inside. The child is moving the tongue, making different sounds. That is from inside. ठीक है, वो उसकी टेंडेंसी है टू स्पीक, टेंडेंसी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड क्या है कि फ्रॉम बर्थ टू 3 years of age जो है सेंसिटिव पीरियड, चलो पीरियड छोड़ो, सेंसिटिव टाइम ऑफ लैंग्वेज है, एक्वायरिंग दैट स्किल। Is it getting clear? Am I clear? I cannot यस hear. मैम। समझ में आ रही है बात? देखो यस यस नहीं करना है, मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे जवाब भी चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है वो टाइम बच्चे की जिंदगी का जब उसके वो टेंडेंसीज, उस पीरियड में कुछ टेंडेंसीज होती है जो बहुत एक्वायर करती है, यानी कि दे नीड अटेंशन, and if you don't give them attention, so they are going to lack in that ability। यानी कि अगर आपने बच्चे को 3 years of age तक एक खाली कमरे में बंद रखा, where the child is not listening anything, deaf बच्चे क्या होते हैं? They cannot hear anything। अब जो deaf होता है, it is not necessary कि वो dumb भी हो, not necessary कि वो dumb हो, वो सिर्फ यहाँ deaf होते हैं, but since उनका जो सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज होता है, जो कम्युनिकेशन वाला होता है, फ्रॉम 0 to 3 years, वो जब कुछ नहीं सुनते हैं तो वो बोल भी नहीं सकते हैं, दे डोंट एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है। वो सेंसिटिव टाइम जो उनका लैंग्वेज एक्वायरिंग का होता है फ्रॉम 0 to 3 years, जब वो कुछ नहीं सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब वो कुछ नहीं सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनका वो लैंग्वेज एक्वायर ही नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट एक्वायर दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो हर बच्चा जो डेफ होता है, ही इज नॉट डम, ही कैन स्पीक, लेकिन फिर उसके लिए, अच्छा, इन बच्चों का इलाज साइंस की टेक्नोलॉजी से मुमकिन है, इनको हियरिंग एड्स दिए जाते हैं जिसकी बेसिस पे उनको लैंग्वेज एक्वायरिंग उनकी होने लगती है, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह सेंसिटिव पीरियड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि ऑर्डर क्या होता है कि सीक्वेंसिंग। हम अगर मॉन्टेसरी की हम जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज हम उठा के देखें तो एवरी मटेरियल, एवरी एक्टिविटी हैज अ सर्टेन सीक्वेंस। यू कैन नॉट पोर समथिंग from a jug until and unless you pick up that jug, and every time you're picking up a jug you're following a sequence। am I correct? तो इसी तरह आप when you're doing working with the frames, even जब तक कि आपने पूरे बटन्स नहीं खोले,
you follow a certain sequence in doing that stuff, तभी तो ओपन होगा. ठीक है. तो इसी तरह अच्छा अब कमिंग बैक टू द लेक्चर, Montessori, Maria Montessori, she introduced exercises in grace and courtesy in reaction to young child's need of order. ठीक है. अच्छा, अब मैंने बताया था कि जो ग्रेस एंड कर्टसी एक्सरसाइज है, दे स्टार्ट एज सून एज अ चाइल्ड एंटर्स योर एनवायरनमेंट. जहां से वो एंटर करता है, you start your grace and courtesy exercises with the child. And these exercises, they are involuntary, they are not planned, they are not individual exercises. हाँ, उसमें कुछ exercises we are going to do, they are individual exercises as well. लेकिन इसमें ज़्यादातर exercises जो होती हैं जिसमें we require a group. ठीक है. और जिस तरह name suggest करता है, to build social structures in an environment where a child is living in, we need to practice these exercises in a group. ठीक है. अच्छा, now grace and courtesy exercises जो होती हैं, they give the child vocabulary. किस तरह vocabulary देते हैं, कौन मुझे बता सकता है? They give the child vocabulary, they give the child actions to perform or steps required to build an awareness in the environment, to build a responsive attitude between maybe another person, maybe a group. मैम थैंक यू और एक्सक्यूज मी, इस तरह के वर्ड ग्रेस एंड कर्टिसी में यूज करते हैं. एक्शन वर्ड में प्लेइंग है, रनिंग है, जंपिंग है, लाफिंग है. बिल्कुल एंड एग्जैक्टली. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब देखें, अब थैंक यू हम अपने आप को तो नहीं बोलते हैं. We don't say welcome to us only. ठीक है. We don't, whenever we wake up, we don't say assalamu alaikum or good morning, good night. We don't say that this thing to us only. तो क्या होता है कि we need interaction. So these exercises, they help build social structures, or they give a better sense of orientation कि किस तरह आपने environment में survive करना है. You're clear till here? ठीक है. यस मैम. अच्छा, जो इनकी the best place to begin these exercises is right from the environment where the child enters. आपके elementary भी हो सकता है, it can be primary as well, it can be secondary as well also, because see grace and courtesy exercises, अच्छा हमने जब Montessori directives का पढ़ा था, तो there was one point, remember, modeling, कि the child, they mimic you, they mimic the directress, so the directress have to be a role model. ये हमने पढ़ा था, आपको याद है ये? ठीक है. yes. तो ये जो ग्रेस एंड कर्टसी एक्सरसाइज है, इट्स ऑल अबाउट मॉडलिंग. अच्छा, और हम इसको फर्स्ट प्लेन ऑफ डेवलपमेंट यानी 0 to 3 years में ही स्टार्ट कर देते हैं. ओके. देन ग्रेस ऑफ कर्टसी एक्सरसाइज जो लेसन्स होते हैं, दे आर गिवन टू ईच चाइल्ड इन द एनवायरनमेंट एंड यूजुअली इन अ ग्रुप. ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अच्छा, अब मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ कि अगर हम बच्चे को, यानी कि एनवायरनमेंट में है बच्चा और हम उसको 1-to-1 दे रहे हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज हम 1-to-1 करवा सकते हैं उसके साथ? जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सरसाइज किया उनसे रिलेटेड कुछ कौन सी ग्रेस एंड कर्टेसी? अब कुछ जस्ट इमेजिन के व्हाट ग्रेस एंड कर्टेसी एक्सरसाइजेस दैट or lessons are given to a child alone. क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप थैंक यू कह सकते हैं, यू शेक हैंड. जब हम शेक हैंड करते हैं तो वी कैन डू इट विद एन इंडिविजुअल पर्सन एज वेल, वी कैन डू इट इन द ग्रुप एज वेल. ठीक है. So as I have mentioned that there are certain exercises that we need, that we should do individual as well as in group. ठीक है. इंडिविजुअल कैसे करेंगे? A child enters the classroom, you say good morning Sana. See, so you are addressing Sana. Now when you say good morning everyone,
Now you are addressing the group. Just excuse me. Yes. अच्छा, चलिए आप बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है. अब like I've given you one example. Now you, both of you will give me an example कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें we can do it as individual as well, and we can do it in the group as well, and we have also mentioned that this increases the vocabulary. Sorry. हाँ बिल्कुल, exactly. You bump into a child and sometimes Colorful words जो होते हैं हम वो use कर सकते हैं. बिल्कुल, आप कभी कभी जानबूझ के भी कर सकती हैं, just to show the child, because see, you are going to role model the child. A director is supposed to role model the child. ठीक है? So a director's role is to give the children correct words and precise movement and steps and procedure in any environment to perform that activity. For example, cuffing. ठीक है? Cuff, directors can make it a fake belief. ठीक है? Cuff किया and she said excuse me. She has used correct words. ठीक है? Precise movement will be she will cover her mouth with a handkerchief or maybe hands. Not even hands. It is now recommended कि हम ऐसे करके in our ये जो आपके elbow के मतलब जब bent है joint है यहाँ पे, we sneeze like this. ठीक है? अच्छा, now after doing this, even if the child sneezes in the hand, according to the situation, see, we evolve according to situations. According to the situation and the time we are living in, the child is supposed to wash hand or sanitize hands. See, मगर ये कैसे पता चलेगा? This is how, this is the role, the duty of the director is to give correct words. ठीक है? Correct words, बिल्कुल precise movements, correct steps, correct procedure. Procedure क्या होगा? The child is about to sneeze. The teacher might make the children bring attention towards her by saying, I think I'm going to sneeze. She should rush to the place where there are tissue. This is the procedure. See, she will use the handkerchief, or she can use the tissue, cover the nose, sneeze inside. It might be a fake sneeze, and then after sneezing, she will say, sorry, excuse me, something like that, and then dispose the tissue in the dustbin, sanitize the hands. अभी क्या हो गया? ये प्रोसीजर हो गया पूरा. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. Now, बच्चे क्या कर रहे होते हैं? Even if there's one child, like if you observe a child who is continuously sneezing, ठीक है? अब now you don't have time for a group lesson, but you need to teach the child कि वो ऐसा नहीं करना है उसने. So what are you going to do? You're going to do the exact same thing. The child, you are going to do in front of the child. Even you can tell the child, for example, Asma, I think I need to sneeze. Then you make sure the child is looking at you. You go to the tissue area. You should have something in the environment, tissue or napkins. Take out the napkin or tissue, sneeze inside, and look at Asma and say, excuse me. Then dispose of the tissue, sanitize the hands. See, now you are done with it. You have given the child, क्या क्या दे दिया? You have given the child correct vocabulary, बिल्कुल precise movements, पूरा full steps and procedure बता दिया कि हाँ आपने ये step करना है, ये procedure आपने. The child then fully absorbs how, when the vocabulary used in environment, or what are the steps used in the is used for that procedure or that activity. So क्या होगा इससे? It will make life more pleasant for others, not disgusting. ठीक है? अब बच्चा छींक रहा है, it might happen कि लोग बच्चे इसका मजाक उड़ा सकते हैं कि भाई क्या हर वक्त छींकता रहता है, या something like that. Like you cannot avoid, have children avoid saying these words, but yes, you can teach the children correct way by role modeling. Okay? Now, in the end, what will happen? The child
the children, I must say, the children who have incorporated these grace and courtesies into their everyday life, it will allow them to have a more pleasant atmosphere in the classroom, have a more pleasant personality in the classroom, or wherever the child goes. Acha. Now we'll have some examples also, like how to greet someone. Sometimes there are special occasions. For example, acha, chalo, now you tell me what are the special occasions to greet. Can you give me an example? Ma'am, according to our culture, according to According to school culture, events. be according to whatever. Like it doesn't depend on culture. Like, can you give me an example of any occasion that you can greet? मैम बच्चों के साथ जैसे रमजान आता है, हम बच्चों को उसकी करते हैं, ईद का इवेंट बताते हैं. Exactly. We can we use greetings when a child is having a birthday. We Yes, greet the birthday. child. These are special greetings because you don't greet everyone happy birthday every day. No, nor do you greet everyone saying how are you, you are sick, something like that. So a child who is sick, you will greet the child differently. A child having a birthday, you greet the child differently. A child who has some loss of some like parental loss or sibling loss in the family, you greet the child differently. So this, but you have to model these things. Okay. Then second example can be how to ask for something, waiting for turns. You can and you can model this by giving away, if you're giving play-doh or something and everybody wants to have it at the same time, you can know you have to make a line. Then how to thank someone, how to ask permission for doing something, how to apologize, how to knock at doors, waiting for permission to enter. And this you can do when you are entering into another classroom. You will knock at the door, ask for permission from the other directress. See, it's not only our environment only, it's the environment of the whole school. And similarly, in the same way, the other teacher who she just cannot open the door and barge inside, because this is what she's going to role model for others. So every director should be very keen at this, and she should knock at the door of every environment and ask, may I come in? So this is how we role model for kids. Then how to take a leave. You want to go outside, or may I be excused? And how to borrow things. And even this should also be implemented, what a child can borrow, what a child cannot borrow. How to cough, sneeze, yawn, blow one's nose, how to pick up things for others, how to receive visitors. For example, somebody enters the classroom. We often tell children, "Oh, Miss Nadia is here. Come on, everyone, say good morning, Miss Nadia." And before that, you as a teacher, you're going to role model and say, "Oh, good morning, Miss Nadia." And then you ask the children, look at the children, and you can maybe if you look at the children, they might get a cue and say good morning, but they will say this good morning when they have when you have done this practice before. um, for any teacher, you can any teacher who comes inside, you say, oh, good morning, Miss Nadia. And children, won't you greet your teacher? They might say good morning. So this is how they're going to learn, if somebody some visitor who's entering their environment, how to receive them and how to offer a seat, how to accompany people. So there is a long list of grace and courtesy exercises, and a grace and courtesy exercise depends upon uh, the environment, depends upon the social norms of a country, of a place, depends upon the traditions as well. And a directress, she should be keen enough to observe and to have a know-how of to which tradition, which culture the children in her class belongs to. Then how to uh, like when we are giving presentation, how children should sit nicely and observe things. Then when you're coming down the stairways, when you're going up the stairways, you should this is usually we teach the children to walk in a line. When you're coming down, you go by
like you always hold the railing, and when you're going up, it's not necessary that you hold the railing, you can go from the wall side also. Then how to introduce yourself to others, this is also grace and courtesy. Then when somebody is in a way and you are also in his way, so instead of being stubborn and asking the person to move away from the, you give way to others, because this is how they are going to learn how to interact with each other. Then how to prepare yourself when you are living from somewhere. And how do you do that? You should have we have care of self, like combing hair, we have these exercises, looking into the mirror, and make sure our clothes are perfect before. See, when every school always instruct directresses that when a child is leaving the classroom, make sure the child has properly tucked in shirt, has properly hair made. And even we used to make sure that we have those, when I was in practice, I had those baby wipes, and I used to clean their faces, because not every time we cannot take them to the washroom. And when my the children in my classroom used to leave, they were having very nice clean faces, and their hands, hair all combed, and the shirt all tucked in. This is what I used to make sure. And even there are other teachers as well who make sure, but our directors should always keep in their mind that this is how, because when you teach a child how to leave the classroom, and at home time the child is going to do the same when the child is going to leave from their homes also. Then how to use a bathroom, how to use WC to flush it out. See, you can use these by using flashcards also. So there are certain exercises that you can do by flashcards also. And then table manners. See, table manners, how to handle cutlery. Like the being Muslims, we hold the fork in our right hand and our knife in the left hand, whereas in Western culture the knife is always in the right hand and the fork is in the left hand. But since we are forbidden to eat with our left hand, so we should teach the child according to our culture that this is how you're going to use the knife and fork. And when picking up spaghetti, and the best way to teach table manner is the time when the children are having their snack times. Then how to offer things, then how to accept things, then how to offer help to teachers. And this all the exercises, when we invite the child, would you like to do this, and we are taking consent of the child, and then we are asking them that, would you like to help me carry these things over there? See, so you are, the exercises itself, they have this thing, अब अपने अंदर वो चीज है कि वो exercise itself बच्चों को teach करती है कि this is how you can help the teacher. ठीक है. Then how to wash hands, ये भी हम ये exercise जरूर करेंगे इंशाल्लाह. एक ये हमारे care of self में आती है, how to wash hands, then how to wipe hands dry, watering plants, then how to stop. We have done walking along the mats, we have done that exercise, remember, in which we were taught that जब हम मैट के बीच में तो वॉक कर रहे हैं तो हमारे फुटस्टेप ऐसे होने चाहिए, ठीक है, एक आगे पीछे, ताकि क्योंकि इतनी जगह होती है कि आपके दोनों पाँव नहीं आ सकते, आप वन स्टेप ऐसे, ठीक है. बट व्हेन वी आर वॉकिंग अराउंड साइड, जहाँ पे दूसरा मैट नहीं है, देन वी कैन कीप साइड बाय साइड, हम फुटस्टेप रख सकते हैं, ठीक है. देन and then grace and courtesy में क्या होता है कि anything thing you are observing कि कुछ bad manners बच्चे कर रहे हैं, picking nose, ठीक है, touching, taking out, making faces, so you there is no set pattern, मतलब कोई set exercise नहीं होती है, there is no set. अब जैसे कि हमने क्या किया था, frames किया था, there are set एक पैटर्न है कि हमने रिबन ऐसे ही खोलनी है, ठीक है. तो ग्रेस एंड कर्टेसी में देयर इज नो सेट पैटर्न, it all depends upon the tradition, your the society, the environment you're living in, ठीक है. तो this was a list of exercises. इसमें कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे भी, कुछ ऐसी होती है, बिकॉज कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें they are almost done in the same way, but there are certain exercises that are not done in the same way, that's according to the culture we are living in. तो उस पे हम नोट लिखेंगे.
ठीक है। अच्छा, अब आपका होमवर्क पार्ट पे हम आते हैं। अब होमवर्क पार्ट ये होगा कि इसमें से आपने कोई सी भी 10 एक्सरसाइजेज उठानी है। मैं आपको लिस्ट आई भेजूंगी, एनी 10 एक्सरसाइजेज यू गोइंग टू पिक, और शॉर्ट नोट उस पर लिखना है। नोट 2 से 3 लाइन का भी हो सकता है। सिर्फ ये बताना है कि जब हम इंडिविजुअल वो करते हैं तो हम किस तरह उस एक्सरसाइज को इंडिविजुअल भी किस तरह कर सकते हैं, ग्रुप में भी कैसे कर सकते हैं। और 10 बहुत ज्यादा तो नहीं है, मैं 5 कर दूं। मैम अफशीन, 5 कर दें। ठीक है। अच्छा चलें, मैं 5 करती हूँ, लेकिन आपने पूरी लिस्ट पढ़नी है, ठीक है। पूरी लिस्ट पढ़नी है, और जब हम ग्रेसिंग कर्टेसी एक्सरसाइजेस को कर रहे होंगे, देन आई कैन आस्क यू कि ये वाली एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे। देन बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू हैव कोई उसमें हम वी आर नॉट गोइंग टू रोल मॉडल, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी लेक्चर ऑन दैट। इट्स जस्ट फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोसीजर, क्या चीज किस तरह करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखो ठीक है मैम। इसमें आपने, अच्छा इसमें क्या होता है, अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह करेंगे, हम इसको करेंगे थ्रू पिक्चर्स, ठीक है। थ्रू पिक्चर्स करेंगे, एंड वी गोइंग टू मेक श्योर दे आइडेंटिफाई द पिक्चर्स विद एक्शंस। किसी ने स्नीज किया, स्नीजिंग वाला आपने क्लिप आर्ट उसको शो किया, पिक्चर शो की, स्नीजिंग। You're going to ask, what is the child doing? Sneezing. What is the child doing? Sneezing, until the child says sneezing. Second क्या होता है? Tissue. When the child wants to sneeze, what the child will use? अब आपने इसको टिश्यू रखा हुआ दिखाया, देन आपने इसको एल्बो रखा हुआ दिखाया, आपने टिश्यू डस्टबिन दिखाया था, चाइल्ड विल थ्रो टिश्यू इन द डस्टबिन। देन यू कैन हैव एन एक्टिविटी जिसमें हम बच्चे से कहेंगे, ओके नाउ सीक्वेंस दीज कार्ड्स। वो सीक्वेंस करेगा कि उसको उससे शक्ल बना रहा है, कोई स्नीज आ रही है, उसने कार्ड पहले रखा, सेकंड कार्ड उसमें टिश्यू वाला रखा, थर्ड कार्ड उसने उसको डस्टबिन वाला रखा, फोर्थ कार्ड उसने सैनिटाइज करने रखा, ठीक है। सो दिस इज हाउ ग्रेस एंड कर्टेसी एक्सरसाइजेस जो है वो दे आर सेम फॉर एवरीवन, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। ओके यस मैम। क्लियर? यस मैम। मैम अभी वो आप लिस्ट देंगी, वो जो मैं अभी 5 आपको भेज लेक्चर रही के हैं हूँ, वो? हाँ बिल्कुल, मैं अभी अभी ठीक है ऑलरेडी मैम। भेज रही हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। उसमें से कोई सी भी 5 एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लें, लेकिन वो 5 सेलेक्ट करेंगी तो उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि जब हम इंडिविजुअल करते हैं तो उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, जब हम उसको ग्रुप में करते हैं तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग का था कि जब हम गुड मॉर्निंग अफशीन, आपने प्रोसीजर जैसे बताया आपने। ठीक है। अब इंडिविजुअल कैसे होगा, गुड मॉर्निंग तो अफशीन, मैम उस गुड मॉर्निंग एवरीवन, अलग हो गया ना वोकैबुलरी। हम्म तो मैम उसके लिए सिर्फ प्रेजेंटेशन, वो शॉर्ट नोट लिख के आपको दिखाने हैं शॉर्ट या वो या परफॉर्म करना प्रोसीजर? है? नहीं नहीं, शॉर्ट नोट, इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट नोट। यू जस्ट ठीक राइट है, अ ठीक शॉर्ट है, नोट, ठीक ओके। है, शॉर्ट नोट। अच्छा, नाउ यू आर गोइंग टू मैम शॉर्ट नोट्स में वही आ जाएगा ना जो आप प्रोसीजर बता रही है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या किया। देखिए, इट डिपेंड्स अफशीन, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी एक्सरसाइज ली है, ठीक है। अब जैसे अब ग्रीटिंग्स वाला है तो आप शॉर्ट नोट में मेंशन कर सकते हैं कि ग्रीटिंग्स जो है वो एवरीडे ग्रीटिंग्स भी हो सकती है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून, व्हेन दे आर गोइंग गुड बॉय, गुड बाय, ठीक है। तो 3 ग्रीटिंग हमारे एक दिन में आ गई। अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज, ठीक है। यू मस्ट मेंशन, अगर आपने ये पॉइंट किया यू विल मेंशन दिस। देन जब हम उसमें आते हैं उनकी कि हम सेलिब्रेशंस में किस तरह डिफरेंट हमारी ग्रीटिंग्स कैसे होती है, तो आप उसको लिख सकते हैं, फॉर मुस्लिम्स यू विल से ईद मुबारक और चांद मुबारक, सम, ठीक है, डिफरेंट ग्रीटिंग जो मुस्लिम्स की होती हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन के हम अकॉर्डिंग टू एक वर्ल्डली कल्चर हम बर्थडे विश भी कर सकते हैं, गेट वेल सून विश करते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सरसाइजेस, लेकिन आपको नोट में मेंशन करना होगा, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आपको भेज रही हूँ, तो आप लोग उस पर स्टार्ट कर सकते हो काम। ओके देन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सी यू ऑन, आज क्या दिन है ना, हाँ मंडे,
इंशाल्लाह। ठीक है, मंडे को करते हैं और बाय मंडे हुमा मुझे आपके राइटअप्स जो मिल नहीं रहे हैं, आप पाइल अप कर रही हैं, इट विल बी अ बर्डन फॉर यू, आपके लिए बर्डन हो जाएगा। मैं इस वीक में इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगी। ठीक है, और मैं आपको लिस्ट सेंड करूंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैम सॉरी प्लीज दोबारा क्या आपकी वॉइस कट गई। मैंने कहा कि मैं आपको अभी राइटअप्स, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आज के लेक्चर के नोट सेंड करती हूँ, लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस सेंड करती हूँ, और जो है आप लोगों ने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज इंडेक्स सेंड करूंगी, जिसमें आप लोग चेक कर लेंगे कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी, कौन सी नहीं की है। और एक मेरे पास भी होगा लिस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट, जिसमें मैं ये चेक करूंगी मुझे किसका कौन सा राइटअप मिल गया है। ओके 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 देन, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके मैम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।